So welcome to my channel, we are Javier. Welcome again to another brand new episode of Reborn. तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Red Dead Redemption के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो मैं जस्ट अभी मैं कहना चाहूँगा पावर नैप लेके उठा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर एनर्जी धीरे बिल्डअप होगी यहाँ पर। बट जो भी है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये गेम सोफा जितना मैंने खेला है ये आउटस्टैंडिंग है डूड। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी यहाँ पर इन एपिसोड्स को देख रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं टोटली बराबर तरीके से। एंड लेट्स सी, हमने लास्ट जहाँ पर छोड़ा था जो कि था एक तरह से हमारा बिट्रेयल हो गया था कहीं ना कहीं काफ़ी कमाल के तरीके से, जो कि प्रेडिक्टेड था। लाइक मैं सही था। लाइक मुझे लग ही रहा था कि वो बिट्रे करेगा एंड उसने लास्ट तक करा। उसने डेफिनेटली कोई भी स्कोप दिया नहीं एंड उसने यहाँ पर काफ़ी कॉमेडी वाला बिट्रेयल करी। बट फिर ये कि उसको हमने ख़त्म नहीं करा है। उसके यहाँ पर कैप्टन जो स्पियंजो जो उसका नाम था उसका हमने खेल ख़त्म करा, जो कि एक तरह से जो मोटा था जिसको आपने देखा था उसका हमने खेल खत्म करा है। बट अभी भी यहाँ पर वो बच्चा है जो मेन है, जो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें करता है एंड कुछ ज़्यादा ही घुमाता है बातों को। तो उसको जब मारेंगे तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो भी है अभी हम करने वाले हैं एल का मिशन, जो कि लुइसा का मिशन है। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस खेल फ्रिकिंग दृश्य का बोर है। Hey, señor. अरे यार मुद्दी की भी शांति नहीं, ऐसा आर्थर सॉरी ऐसा जॉन मार्स्टन सोच रहा है। डूड वो जो गन थी वॉल्केनो पिस्टल है इसके पास, दाएं तरफ वाले के पास। Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muévese, cabrón. Muévese. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Allende did this. Then he took the honor of 2 young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. Well, you know I'll do whatever I can, but I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escuella. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you, out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Come on, the army convoy is already on its डूड way. मुझे पता नहीं था इसके फादर यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि लुइसा ने बताया उसके दिल को कुत्ते को खिला दिया, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल है मैन, जो ज़्यादा ही ब्रूटल है। ओह शूट, यहाँ पर डायलॉग जस्ट शुरू हुआ था, मैंने गलती से स्किप कर दिया। मुझे लगा यहाँ पर और कोई डायलॉग सही है। व्हाट द फ्लिप, मिस कर दिया मैंने डायलॉग। It is not far now. The army convoy will be coming from the east. We going to steal their supplies? No, destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. Do you have experience with explosives? A little. Been a long time.
Good, because we do not. You will man the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. I'll do my best. We will do this for my father, John. ओके कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने कुछ डायलॉग सुने. There they are. These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay, follow me, gentlemen. Vale, where do you want it? Show the rebels where to bury the explosives on the road. Dude, ये तो मुझे बताना, चूज एक्सप्लोसिव लोकेशन, ये मुझे भी नहीं पता है बाय द वे. बट सीन ये कि काश ये बताते ज़्यादा बेटर रहता. द लेंथ ऑफ वायर लिमिटेड, कांट बी टू फार फ्रॉम द Show us where to डेटोनेटर. place the dynamite. Wait, we must do this now. अरे भाई समझ गया मैं. ओके तो करना ही है ना, तो यहाँ पे करते हैं. वेट. ओके तो ये चाहते थे कि मिशन फेल हो जाए. हाँ? क्या बात है, क्या बात है. इस बार तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डूड. इधर लगा एक. Another one here. This is good. Here's good. And the last one here. Good. Now go. Luisa is waiting for you at the top of the Okay, hill. तो ऐसे करते करते मतलब ट्रायल एंड एरर करो, फिर पता लगाओ कि क्या ये सही है कि नहीं. तो आई गेस इस बार मैं सही हूँ. Todos, a sus posiciones. They are coming. Get ready, John. There it is. Get ready. इस बार मैंने एक कॉन्वॉय को तो उड़ा दिया, मतलब एक वैगन को उड़ा दिया था, बट और भी वैगन बच गए थे. वही सीन है. पिछली बार उसने रिएक्ट भी पहले किया, क्यों उड़ाया क्यों नहीं. अरे भाई उसको पहुंचने दे. मतलब मेरा प्लान ये था कि मैंने कही ना कि एक तीर से दो निशान लेने थे, बट मैं ले नहीं पाया. वो अलग ही हिसाब हो गया डूड. तो इस बार क्या होता है वो तो देखने वाली बात रहेगी. कहाँ है मेरा, ये रहा यहाँ पर है. इस बार ज़्यादा दूर दिया नहीं है मैंने. मैं फोड़ने वाला हूँ उसको. ये कुछ ज़्यादा करीब पहुँच रहे हैं. लेट्स गो. वो वैगन का है. वो वैगन ही हमारा मेन टारगेट है एक्चुअली. वो वैगन आ रहा है, क्या बात है. लेट्स गो बेबी. Quick! Now is your chance! नाइस. Kill them all! Thank you, Perfect. Mr. Marston. We are a step closer to power. My father would be very proud. I hope it was worth it. I must return to Campo Mirada. Meet me there when you can. I will do my best to return the favor. ओके तो काफ़ी छोटा मिशन था एक्चुअली. इसमें आपको सिर्फ दो क्या नाम थे इनके, दो वैगन को उड़ाने थे. दैट्स सो नाइस. हालांकि ये पहले ट्राई में हो सकता था, बट इशू हो गया और कुछ नहीं. ओके तो ये भी डन. फेम 200 बराबर. अब चलते दूसरे मिशन की तरफ, जो कि अभी तक खुला नहीं है. यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कैप्टन डी सैंटास डाउनफॉल, ये मैं चाहता था. अगर ये सही में होता है इस मिशन में, इस एपिसोड में, John! मज़ा आ जाएगा. Thank God you have come. That wretched animal de Santa has been sent to oversee a massacre in El Sepulcro. Come, we must stop him and finally kill that vermin and all of Allende's other followers. Go now. My men will show you the way. I will stay with the camp. राइट टू द स्पेलक्रो. क्या मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ बेबी रे? We will ओके speak नो when we वरी. get there. We must save our energy. बढ़िया है. यहाँ पर कोई बातचीत नहीं, बिकॉज वी हैव टू सेव अवर एनर्जी डूड. सही है, सही है. तो यार मैंने बहुत कष्ट की बात है, इन रेबल को मैंने बहुत मारा है. लेकिन आपको तो पूरा मिशन ही याद होगा जिसमें हमने कैटलिंग गन का इस्तेमाल करके कितने ही रेबल्स का सत्यानाश किया. हालांकि अगर ये रिएक्ट करते, लाइक अगर ये थोड़ा सा कनेक्टेड होता, ब्रांचेस होते, तो पता चलता हमें कि ये लोग भी शायद मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते. बिकॉज मैंने उनके साथ मिलकर रेबल के अगेंस्ट बहुत गलत काम किया है, जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिक्र नहीं करवाया इस स्टोरी लाइन पे. बट कोई बात नहीं. बट हाँ, ये थोड़ा सा अलग ही रहता अगर वो रिएक्ट करते. ये जो किया है मैंने उनके अगेंस्ट, ब्रूटल है मैन. बट वॉट एवर,
अभी राइट नाउ मैं अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहा हूँ इन्हीं के लिए, तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी रेबल्स के लिए। ये जगह कितना कॉमन है, हम कितना आए हैं इस पटरी के हिसाब से। हालांकि हम यहाँ पर रुकना नहीं है, बट यहाँ पर हम रुक चुके हैं। El sepulcro is just up ahead. All right, let's hold up. Tell your men not to open fire till I make a move. We don't want to give them a chance to escape. And leave DeSanta to me. I need him alive. We will wait for your lead, señor. En el nombre del gobierno provincial del coronel Allende y I can see him. de este país, te condeno a muerte por traición. ¿Tienes algunas últimas palabras? No. Dude, वो रेबल से ही उसी की कब्र खुदवा रहा था। Oh my God, savage है लौंडा। ¡Viva la revolución! मैं तो उसी को पकड़ूंगा। कहाँ है कैप्टन डी सांटा? I can see you man। अरे अच्छा, मुझे अलाइव पकड़ना था। लॉल, तो मतलब मुझे हॉक टाई करना है। डूड बच गया वो। मैं पता है मैं घोड़ा का इस्तेमाल कर सकता हूँ अभी। Here we go। काम कर दिखाया आपने। हॉक टाई इज द बेस्ट थिंग एवर डूड। लेट्स गो। अब ये कहाँ जाएगा? कैप्टन डी सांटा को क्या हम इंटरोगेट कर सकते हैं? काश हम अगर कर पाते हैं तो मजा आ जाएगा। इससे एग्रीमेंट मुझे लगता नहीं और करना सही रहेगा, बिकॉज इसका टाइम आ चुका है बॉस। ओ सिमेट्री वैसे ही मुझे लेके जाना है, तो घोड़ा बुला के कोई मतलब नहीं था। चलता है। आई डोंट नीड योर हॉर्स। You fucking pig! Go back to your country! Where is Javier Escuella? Wait. Okay, all right. Shit. All right. Casa Madrugada. It's hold up there. क्या गारंटी है सच बोल रहा है? Now hurry up and kill me, or just let me go, okay? Can we kill this piece of shit now, señor? Or would you like the pleasure yourself? I'll pay you. Kill डी सांटा, walk away and let the rebels take care of him. You know what? Now we're even, Captain. Sí! Dubra. Viva Abraham Reyes! It is done. Come on. Now we इसको मेरे हाथ से मर रहा था डूड। मैं अच्छा ये डिसीजन मेकिंग करने दिया रॉकस्टार गेम्स से, ये अच्छी चीज है। मजा आया। There is no time to stop. क्या I am बात glad है। it was you, compadre. There's Well, some what things did you it- gotta finish yourself. That man is responsible for hundreds of innocent deaths, maybe thousands. He will burn in hell. We all will, my friend. Espinosa is dead. De Santa is dead. The army is without leaders. We must move on Allende now, before it is too late. First, you need to help me find Javier Escuella. तो डेफिनेटली उनका यहाँ पर एक मिशन चल रहा है कि एलियंदे जो उनका जो भी है उनको पूरी तरफ विनाश करना है उनको, वो जो भी ग्रुप है। एंड राइट नाउ मेरा भी मिशन है जो हावियर को ढूंढना है मुझे। फॉर एग्जांपल ये बात कर रहे हैं अभी। Not anymore. Old friends make their worst enemies. You're telling me. Escuella is known in this province. He was a revolutionary one, but then he went to your country. Now they say he kills for anybody who will pay. That sounds about right. तो वही हावियर एस्कुएला को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हावियर ने बड़ा गलत काम किया। तो एक एक्चुअली वो डच के साथ चला गया था। एंड बाय द वे मैंने सुना है कि इसमें, सुना नहीं मैंने देखा है इसमें डच भी आता है अपने उस गरीबी वाले फॉर्म पे, बिकॉज
डच के पास वो गद्दी नहीं थी, गद्दी नहीं है अभी, उसके पास कोई ग्रुप नहीं है जो कि हुआ करता था रेड डेड 2 में। तो अपने ग्लोरी डेज में नहीं है वो, इतना मैं कह सकता हूँ बस। सर्च फॉर हावियर। वो क्या, डिफीट द What the flip, he survive or what? Run away! That's enough, my friend! ¡Muere, pelado! Dude, बचा नहीं हो, मुझे लगा वो कवर पे चला गया था। What the flip, गिर रहा है क्या? यहाँ पर हावियर मुझे लगता है नहीं इतना आसानी से मिलेगा। Where's Javier Escuella? Javier Escuella. He hasn't been seen around here in months. I knew it. You shut up this place for him, huh? I wouldn't spit on him if he was on fire. I don't blame you. But Captain DeSantis said he was here. And you believe him? You must be more stupid than you look. Go shoot up someplace else. Hey, मैं कह ही रहा था, मुझे भरोसा नहीं इस बंदे पे। इसने सही में कांड कर दिया, ये बंदा भरोसेमंद नहीं था। यहाँ पर हावियर एस्कुएला नहीं है। The Great Mexican Train Robbery. Hey, हम रॉबरी करने वाले हैं। वही, मैं अभी तक रॉबरी वाला मिशन एक भी नहीं किया रेड डेड 1 में। So this is going to be the first one, I guess. Tenemos que movilizar fuerzas en el extremo sur de la llanura para que los flancos del este y el oeste. Where is Abraham Reyes? अबे सामने है। Here! well, look who it is. The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexican Revolution. I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston, I do. A man like you, or me, with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos! Set my people Rule the entire free. country? Libre Mexico! ये रूल करना चाहता है। Libre Mexico! I don't know about that. Their energy is like food to me. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. Ay, Dios mío, I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. अभी भरोसा नहीं है अब्राहम पे, by the way. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you. Don't you think? Very little is beneath a man such as me. Ha! Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother. Let us strike while the iron is hot. Vámonos, mis hermanos. You must tell me more, John. Are my sources correct? Have you come to Mexico to murder your two best friends? Not exactly. We were friends once. A lot's changed since then. Now that we are friends, I hope you will give me some warning if you get a sudden urge to kill me. You'll be the first to know when I kill you, I promise. So where are they? Who? Williamson and Escuella. I'm not sure exactly where. They are definitely in Mexico. That much I know already.
You told me you'd found him. And I will. I have my very best men working on it. If I find out you're lying to me, Reyes, you'll really see the man I used to be. I will give you your friends, I promise. Just give me time. Dude, बेचारे जॉन के साथ ऐसा ना हो कि सब के सब बिट्रे करते हुए बिट्रे करने लग जाए. Same gang together. Same. Under a fella called Dutch. We were all bad kids, lost, angry, and forgotten. He kind of saved us. And turn you into criminals? Dutch didn't see us that way. We robbed banks, stole from the rich, and we gave the money to the people who needed it more. So he was a revolutionary too, like me. I suppose. He saw that the system of power was rotten, that good people had been crushed for too long, and he believed that change could only succeed if it was brutal and relentless, make America what he felt it was supposed to be. I like the sound of this man, Dutch. Another violent idealist. Where's he now? I don't know, but I gotta find him once I'm done with them two. In the end, he went insane, lost faith in everything, and everyone. Red Dead 2 का plot है dude ये. Summarize क्या है You have इससे? quite a story, John Nice. Marston. I really am a little jealous. Jealous? Of his poetic potential, I mean. He would make an excellent corrido. A bullfight? No, mi hermano. That is a corrida. No, a corrido is as Mexican as Mexico itself. A song, a poem, a story, a ballad. A musical tribute to a heroic man and their great deeds. There are over 100 written about me. Remind me to stay away from men with guitars. In a country where most people cannot read the newspaper, song is a powerful means of communication. We do what we can to battle the lies and propaganda of the government. I know. I've seen your posters. In the capital, they are already talking about my legendary escape from El Presidio, how I fought off 1,000 Mexican soldiers with my bare hands. Finally, the people have the truth. I have to know, what did you think of Agustin Allende, young? I saw enough to know he ain't a good man. It is bad enough he beats the people he swore to protect, but it is worse that he enjoys it. Something must have made him that way. Cowardice made him that way, my friend. That and Sanchez, of course. Who? General Ignacio Sanchez, our country's kind and generous dictator. Everything comes from him. It is like a father who beats his son, and then the son takes his dog outside and rapes it. That's a very specific example, Allende Abraham. es una marioneta. How do you say, a puppet? Everything he does is controlled by Sanchez. In America, they told us Sanchez was making things better here. Pinche propaganda. He talks about economic reform, about how this is a new golden age for Mexican people. But look around you. The people are poorer than ever. Yeah, definitely ये हम देख सकते हैं. Nothing more than a perri... Mierda, you're slowing us down, Marston. A what? A little puppy dog that leads his feet and makes him feel loved. Not far now. Chuparosa is just up ahead. We must hurry. The train will be Chuparosa में leaving लैंडन soon. रिकेट्स What's by on the way. that train that's so important? वो अलग बात है वो मिल नहीं रहा है काफी देर से. Information that the army is transporting a vast quantity of supplies to distribute to their forces. Do we have a plan? I will explain when we get there, but those supplies won't be arriving. I figured as much. Today, Allende will pay a high price for his treason. Come on. No लैंडन रिकेट्स. यहाँ पर नहीं है इस बार भी. लगता है वो छोड़ के चला गया मेक्सिको. वो था बस मेरे लिए. पता नहीं वो आएगा क्या नहीं बाद में किसी भी मिशन में. कोलैब होगा होना तो चाहिए. वो लुइसा को जानता है तो क्या उसका बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है बचाने में. So listen, this train is filled with valuable supplies we need, but it's also filled with government troops. We'll set up a very loud distraction. You can board the train, and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay, but listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? There are too many soldiers. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, John. तो सिर्फ हम दोनों हाइस करने वाले. ओ भाई साहब. Wait for the distraction.
If you are spotted near the train, the guards will attack you. ओके तो मुझे वो भेज रहा है. मुझे पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि अब अब्राहम मुझे यूज़ करेगा. डेफिनेटली ये थोड़ा सा वियर्ड है बट हाँ यही, और उसने मुझे बचाया है इसलिए अब वो मुझे घुमाएगा इंफॉर्मेशन को लेके. ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कॉमन दिखने वाली है मुझे. क्या नहीं, इसका खेल ख़त्म. Dude, throwable knives इसमें भी बड़े सेटिस्फाइंग है. सेटिस्फाइंग और काफ़ी फास्ट है, ये भी आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल की बात है. ओके तो अपना वो ले लेता हूँ नाइफ, क्योंकि मुझे चाहिए. तो वेस्ट नहीं कर सकता वो चीज़ को मैं. वेट अ मिनट, थोड़ा सा रुकना. ओके वी आर बैक ऑन लाइन बेबी. यहाँ पर ऐसे और भी हैं. टेक आउट द गार्ड्स. ये 2 गार्ड्स को लेना है मुझे. ये तो आसानी से. ओ ऊपर भी है क्या गार्ड? मैंने देखा ही नहीं. लॉल डूड, थ्रोएबल नाइफ्स कमाल के. लाइक मैं कहना चाहूँ Red Dead 2 में अगर आपने देखा है तो उसमें भी थ्रोएबल नाइफ्स है जो कि इनसेन है, एंड इसमें भी है. डिटैच करना है मुझे तो पहले अपना नाइफ ले लेता हूँ. पहले मिल गया मुझे. तो मुझे खड़ा कहाँ होना था? मैं जहाँ खड़ा हूँ वो डिटैच वाला एरिया पे नहीं हूँ मैं. कोई बात नहीं. टेक कंट्रोल ऑफ द गैटलिंग गन. ओह माय गॉड, जिससे मैंने कितने ही लोगों को मारा है. व्हाट अप मैन, क्या चल रहा है बड़ी? और क्या बंदे बुलाओ भाई साहब. बस इतना ही. मैं इस गैटलिंग ने छोड़ना चाहता नहीं था, बट अगर बंदे नहीं आएंगे तो मुझे करना पड़ेगा. As you can see boys, इतने बेशरम है ये लोग. Take control of the engine car. Okay. इससे आगे मैं कभी गया ही नहीं था, तो फाइनली मैं जाऊंगा. ओह नहीं गया हूँ मैं एक्चुअली. ये मेरा सेकंड टाइम है. क्या नज़ारा है डूड. धूप निकल रहा है और क्या चाहिए. ओ भाई, इसी दिन हमने किया ये कांड इनके साथ. तो ये रॉबरी है जो कि सिर्फ मैंने अकेले किया एक्चुअली. जैसे कि मैंने बताया, मुझे अब्राहम पर हल्का सा भी ट्रस्ट नहीं है. इवन तो उसने मेरी ज़िंदगी बचाई एक बार, बट मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अब्राहम भी हमारी मदद देते रहेगा एंड ऐसे घुमाता रहेगा कि अब ये यहाँ पर है, नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है, वगैरह वगैरह. You move like a cat onto that train. Magnificent. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vámonos. Even though I don't think so, मुझे कुछ चाहिए भी. We need to get into that armored car. Plant the dynamite on the armored car है. Okay. मुझे वैसे भी करना ही है. तो ये ऊपर दिखा रहा है. Come on, my friend. Keep that hatch open. ¡No lo intentes! ¡Este vagón es de acero! अंदर है क्या वैसे? अच्छा अंदर जैसे कि उसने बताया बहुत कुछ आर्मरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं भी ले सकता हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए तो. Maybe Allende has another
लूट द आर्मर्ड कार. ओके, सबसे पहले बॉडी लूट पाएंगे हम. पिस्टल है वो भी लिया हुए. डूड ये बहुत सारे बैग्स हैं यहाँ पर जिनको मैं लूट नहीं सकता. ओ यहाँ पर तो तिजोरी है डूड. Someone might as well have this. Rack safe. Oh my god, ये कैसे करेगा वो? The right to find the first number. अच्छा ऐसे होता है काम. Nice, अच्छा सिमुलेट किया है. Whatever that. There we go. अब कुछ भी नहीं है एक्चुअली यहाँ पर. पैसे हैं देख रहा हूँ मैं. वो ये क्या है? एक नई गन. क्या मैं डुअल बिल्डिंग कर सकता हूँ फाइनली? $200 दिए हैं भाई साहब लोगों ने, जो कि बहुत ही कमाल का फिगर है डूड. रिटर्न टू रेस. कितना सुबह हो चुका है यहाँ पर. सही लग रहा है वेदर. Hello, this is a great day for the revolution. Not a bad day of robbing the establishment to give to the poor, eh, Mr. Marston? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuella are holed up. All in good time, amigo, to deliver these goods. I see you back at the ranch. Oh, my spies tell me they soon will have the information you need. मैं अभी भी गारंटी नहीं हूँ कि सच बोल रहे कि नहीं. अलग ही लेवल है भाई साहब. लेट्स होप. इसके सही में स्पाइस है. सही में इसने स्पाइस लगाए हैं. लेकिन मेरे को तो ट्रस्ट ही नहीं है इन पे. Savage shots right here, right now. Let's go, John. Bye, Johnny boy. तो ये भी फिनिश. क्या लग रहा है वेदर. कमाल का है. तो यहाँ पर रीस का एक और मिशन है. तो रीस के अलावा यहाँ पर और कोई मिशन नहीं है. तो एंड ज़्यादा दूर रीस है भी नहीं, बट कोई बात नहीं. द गेट्स ऑफ एल प्रेसिडिड या डियो था वो. प्रेसिडियो है. ओ भाई साहब क्या वेदर है. इंसेन है. Just insane, man. You rougher, huh? What would your most loyal follower, Luisa, say about that? Who? Luisa, the girl from Campo Murata? Her. A gentleman never tells, but she was a most wonderful. I just say she was incredible. जैसे कि मैंने बताया इससे मुझे भरोसा नहीं था. कहीं ना कि वही साबित कर रहा है धीरे धीरे. Take her when you have the chance, my brother. She thinks she's your wife. My wife? These peasant girls, they believe every word a fellow says. So naive. It's really quite charming. I love peasants. Don't you love peasants? I love them. They have such purity. Are you gonna marry her? Ha! Marry a peasant? My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men. The very thought that I would marry some peasant girl with a tight gun and the hands of a farmer, well, I really don't think so. My mother, que Dios la cuide, would turn in her grave. Interesting. But come on, let's run. I've got an amazing present for you, my brother, huh? Yes? The man you seek. Together, we will bring them to justice. Let's go. तो मैं वो सीन तो मैं अनसेंसर्ड करने वाला. मुझे करना ही पड़ेगा. बट वो सीन अगर आप देखते तो आपको पता चलता है कि इसे भरोसा करना एकदम भी सही नहीं है. सो वोट है वो बैड. देखते कब तक रईस हमारे साथ हैं. कब इसका मुझे खेल खत्म करना है. मैं रेडी हूँ जब भी इसका खेल खत्म करना है. मैं एकदम कतराऊंगा भी नहीं हेड शॉट मारने में. यार मैं जब भी इसके मिशन कर रहा हूँ बारिश क्यों हो रही है इतनी. एल प्रेसिडियो. My brother, just received word of your fight with Allende's men at El Sepulcro. Finally, the Santa is dead. I'm happy it was your bullet jump. After what he did to you in Chucarosa. I wasn't gonna give him a second chance to kill me.
Must have felt good. Not particularly. He was hardly worth a bullet. Where are they, Abraham? They are at El Presidio, John. Can you believe it? The place we first met. The scene of one of my greatest victories over Allende's traitors. You could not write a better story. It's a story I want to finish. It is a story we both want to finish, my brother. If my rebels can take El Presidio, then we can move on Escuella. The revolution is happening, John. Are you sure they're there? Escuella and Williamson? Javier Escuella is there. That much I am sure of. Don't know about Williamson. Escuella will do for now. I am told they paid Allende to hide them. They have been in his protection since you arrived in Mexico. See, you should have trusted your brother, Abraham, all along. When we have them, then you can start making me feel bad. Immediately after you thank me for everything I've done for you, amigo. फिर हम फिर इतने करीब है यार, किसने बताया कि अब हावियर एस्कुएला यहाँ पर है, कहीं ना कंफर्म कर रहा है वो, उसने देखा है। बिल विलियम्सन के बारे में पता नहीं, बट फिर लग नहीं रहा कि ये सच है। They tell me he was once a notorious bounty hunter and also one of the early revolutionaries. That sounds about right. All before my rebellious urges took hold, of course. I think I was still traveling in Europe at the time. I was living in Madrid with the ambassador's wife. That sounds about right as well. Escuela was always a foreigner. A cynic who desperately wanted to be a romantic. Whereas you, John, are a romantic who wants to be a cynic. Javier would die fighting for what he believed in. He had a lot of passion, no love. Although he really admired Dutch, of course. But then we all did. He was the leader of your little group of fortune hunters, ¿verdad? When Dutch started falling apart, it hit Javier harder than any of them. He went crazy. It was like the one thing he'd ever believed in turned out to be a fraud. You talk about him fondly. It ain't exactly fondness. We was close once. But he never cared for me or anybody else. Not any of his so-called brothers. He left me to die. We had the chance to save me. Didn't he teach you any Spanish to revolt this time you were together? I remember Cabron being used a lot. Well, now you get to pay that cabron a surprise visit. I ain't here for revenge. I just need him and Williams. काब्रोन वैसे बहुत बोलता था हावियर, मुझे याद आ रहा है। अब इसने जबकि बोला है तो मुझे पता चल रहा है रेड डेड 2 है, हावियर जो था वो काब्रोन बड़ा यूज करता था। तो या Another loyal supporter, free Mexico. You want a name? You can't even remember the name of the girl you're marrying. Have you ever known Power John? I'm a semi-literate farmer and hired killer. I ain't in power. Then you will never have the knowledge that any woman will bear your child. And for her, it will be an honor. I've known about enough bastards without making too many more of my own. A man like me cannot be with just one woman. It would be an injustice to the people I have devoted my life to serve. You have an interesting way of serving the people. Kind of like a national gigolo. I owe it to the future of Mexico to breed, my brother. If I can get noble blood flowing through the veins of peasants, can you imagine how great this country can be? An army of reyes, of kings. I wish I'd never asked. Have you enjoyed your time in Mexico, John? It ain't exactly been a vacation. Why are you talking like this is already over? I don't know. One way or another, this might be... Dude, एक और स्कैम। Mexican. ऐसी बातें वही कर रहा है। Some of them been kind, but a lot of them tried to kill me. Come, my brother. I know what you Americans call us. Greasers, sun greeners, pepper guts. ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है अचानक? Like farmers very much. I don't care who a man is, what he does, or where he's from. If he treats me right, I'll do the same. It's that simple for you, isn't it? You would make a fine socialist. What about the Chinese workers here? I hear you ain't exactly made them very welcome. That is different. They are an inferior race. You have all the makings of a great leader, Edgar.
इन्होंने बहुत डिटेल में गए थे लग उस टाइम में. Momentum. Do you have any idea how many times I thought about the day I will march into Escuella and storm Allende's mansion? I think I have some idea. Soon it will be me sleeping on those silk sheets and the colonel lying with the cucarachas. From what I've seen of Allende, you might want to wash those sheets. You might be right, my friend. Do you really think a revolution can work? Do you have enough men? Revolution begins with one person, John. One person ain't gonna defeat the Mexican army. The poor are many and together we are strong. They are ready to fight. If it does work, It will. if it does work, and you take down Allende, what then? I will give the greatest speech of my life. But after all the fighting and all the speeches are over, what will you do? I will march on the capital and take on Sanchez himself. All right, when Mexico's yours, and you have all the power you desire, what will you do with it? Like any great leader, my brother, I will delegate. अभी कमाल के क्वेश्चंस करें डेफिनेटली. To say I'm not usually in favor of American Okay, we go. interference, but it Dale, will be बताओ. sad to see you go. I ain't going nowhere till I have Bill Williams. What will you do when this is over? अब वो मुझसे सेम Wanna चीजें go बात home, कर रहे हैं. work my land and grow old with my wife. That is hard for me to imagine. It's hard for me too. But I've pulled this trigger too many times now. I'm getting tired. Well, get ready to pull it a few more times. El Presidio will be heavily guarded. Oh, I think I got a few more left in me. Maybe one day you can return to Mexico like Lando Enriquez. A famous outlaw come to die in the sunshine. I can always use a cynical American renegade on my staff. I'll bear that in mind. डूड लैंटन रिकेट्स जो मिला ही नहीं हो. क्या कुछ साइड मिशन में उसके मिशन थे क्या? लाइक मैंने साइड मिशन काफ़ी सारे किए ही नहीं रेड डेड 1 के, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि मैं मेन मिशन में फोकस कर रहा हूँ. बट अगर ऐसा कुछ हुआ उन साइड मिशन में जो मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत ही घातक वाली बात रहेगी. हालांकि रेड डेड 1 के साइड मिशन काफ़ी कनेक्टेड है, मतलब काफ़ी कनेक्टेड है. मे बी पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ गेम से कनेक्टेड है. लाइक गेम में अगर कोई आपको एनपीसी दिख रहा है तो उसका एक अलग स्टोरी भी हो सकता है. ये रॉकस्टार गेम्स में होती है चीज़ें, एंड रेड डेड 1 में तो है डेफिनेटली. सामने मुझे क्रॉस दिख रहा है पर हमें तो आना भी है. पहले के रॉकस्टार गेम में ये GTA वाला सीन था. Prepárate, mi hermano. This is our time. My men will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at the front gate and jump off when you're close. He's been packed with 5 crates of TNT. That sounds crazy. How long's the fuse? Yes, like Oh, I boy. said, fun times. It's plenty long enough, I think. ओ तेरी, See you in there. ओ भाई साहब, लेट्स गो. ये सब काम ऐसे कभी कमाल करते हैं. जंप आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है. वो भी हमारे साथ है तो साथ में मरेंगे एटलीस्ट. कीप योर स्पीड अप और एंड बी रेडी टू जंप ऑफ. ओके, मुझे धमकी नहीं दी गेम ने. सेम ऐसा तो अब तो लग रहा है. ओह शूटिंग का स्टैमिना. ओके, अब शायद हुआ है तो चलो एटलीस्ट हुआ ये. भाई साहब कितना कष्टदारी था ये. पता नहीं कौन सा वर्ड है ये, बट डेफिनेटली हमने बोला है. Go find Escuella, young. Leave the army to us. एस्कुएला को ढूंढने. अरे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऊपर है, तो इनमें से कोई ना कोई एक्सक्यूला होगा. हावियर एस्कुएला इसमें नहीं है तो और कहाँ हो सकते हैं? ये कौन सी गन है? बस स्प्रिंगफील्ड राइफल क्यों है? Javier, I've come for you. हाँ, जॉन को पता भी नहीं है बट डेफिनेटली वो बोले. अबे ये हावियर ही है. लेट्स गो. It's been a long time.
Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? भाई साहब Come on. Javier है ये. Your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So now you do the government's work. And what do? You just work for a different government. Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now, I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. In Dutch. Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. Hmm? You left me to die? Whoa. To save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you. Even now. मैनिपुलेशन राइट देयर पता था मेरे को इसने अपने वो तो अच्छी बात इसने अपना चेहरा काफी जल्दी दिखाया ऑक्टाई और किल यू नो व्हाट मेरा प्लान है इसको ऑक्टाई करने का सबसे कूल है वो ऑक्टाई करना कम ऑन घोड़े लेट्स गो क्योंकि मे बी एक्स्ट्रा डायलॉग्स का मौका मिले हमें मतलब जाने का मौका मिले और क्या क्या सीन है अबे ये नाइफ क्यों ले रखा है इसने ओह माय गॉड ओह नो स्टैमिना नहीं इसके पास मैं देखा ही नहीं मैंने once more टुडे हॉर्स कितना बर्बाद है लॉल मेरा खुद का और सो ज़्यादा बढ़िया था नॉट गुड इनफ एक्चुअली I just want Williams and Javier. ओ भाई कितना करीब था ये करीब लॉल गड़े ये घोड़ा एकदम बेकार है There we go Give it up, Javier. ऑक्टाई कर दिया You in, my brother. I'll let the others judge you. आई मीन किलिंग करना इजी ऑप्शन रहता बट Where's Bill, you son of a bitch? Do you think I won't kill you, brother? He ain't here, brother. He's with agenda. यही बात है तो उसको मारना काफी आसान होता A little late for revenge, John. ऑक्टाई करना कूल था लेट्स गो I ain't here to kill you, Javier. This is just business. वैसे जॉन ने माइका को मारा था इतना मुझे पता है अगर माइका वहाँ पर नहीं मरता Abigail wouldn't want this. रेडेड वाले भी Abigail आता killed हूँ you already. तो She always thought you was a creep. Yeah. इसका स्टैमिना कितना फुल नहीं होता इन घोड़ों का जो है यहाँ पर एज यू कैन सी बॉयज एंड गर्ल्स बट डेफिनेटली अगर मेरे पास घोड़ा होता You and मस्त me. था Like Cain and Abel, I guess. Leaving each other for dead. राइट Javier क्या बात है हमने कैप्चर कर लिया बंदे को Happened. Wasn't like you thought it was. Whatever you say, old friend. सारे के सारे मैनिपुलेटर थे यार उनके गैंग में ज़्यादातर लेकिन रियल में कौन कौन था होजे था अपना Not me. आर्थर था Yeah, and he's next. क्या मुझे कोई याद नहीं और So you and Bill are back together. Two crazy men sharing a bed. Go to hell. Pathetic fool. You're gonna be locked up for a hell of a long time. Unless they choose to hang you. Finally, you have what you came for, my friend. Dutch never liked you, you know? जहाँ से है वहीं पर जा About रही है him or you alone. Ah, you shit. Hope you're sure about what you're doing, brother. You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? You puto. One day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway.
It was just an excuse, and we all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army sent reinforcements. Come. Yeah, go with your puto. अगर इसको मैं मार देता तो यहाँ पर लेके भी नहीं आना पड़ता। ओके तो मुझे ऊपर भेज रहे हैं। ओ यूज द कैनन। ओ माय गॉड दृष्टिकोण मजा आएगा। ओके ओ यहाँ पर मुझे आना था। फाइनली लेके आ चुका गेम। लेकिन तुम रास्ता भूल गए, कोई बात नहीं, हम तुम्हें भेज रहे हैं। आर्मी है कब ऐसे? ओह फाइनली कुछ आया मैप में। वो वैगन लेकर आ रहे लोग। क्या सबका एक ही वे है? कोई अलग अलग वे से आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। सबका आई थिंक सबका एक ही वे है। ओ भाई ट्रिपल आर का सीन था ये। ओह नो, तीनों के तीन हो गए। परफेक्ट। ऐसा मिशन था रेड डेड 2 में भी। अगर आपको याद होगा वो जो क्या नाम था उसका, उस जगह का नाम जो उस आइलैंड में हम जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के मिशन थे। हालांकि मैं उसका फैन नहीं हूँ ज़्यादा बड़ा उन मिशंस का। परफेक्ट। गेट एस्कुएला फ्रॉम द जेल सेल। अच्छा आज ही फांसी देंगे हम? क्या सीन है? कुछ देर के लिए रखा था, वो भाग ना चुका हो, मुझे ऐसा लग रहा है वो भाग चुका होगा। ऐसे ही होता है गेम्स में, मूवीज में भी ऐसे ही होता है एक्चुअली। नहीं वो भागा नहीं है। परफेक्ट। Two old friends reunited. It is a beautiful thing. Mr. Marston, fancy Whoa, seeing you Milton है again. ना ये? I must say it's a Dude. pleasant surprise to see you. You've done well, Mr. Marston. Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach. Come on, you. Get in the damn automobile. Can we assume कौन नहीं one of our जानता इस commitments बंदे is को? cleared? Unfortunately, nothing is cleared, John, until your obligations are met. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderland is in the area. Oh, your wife sends her regards. इन पे भरोसा करना भी कभी सही नहीं था डेफिनेटली। आर्थर मॉर्गन के टाइम पे या रेड डेड 2 के टाइम की बात करूं तो हमने इसको तो पकड़ लिया, तो अपना नाम क्लियर करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है सीधे शब्दों में, क्योंकि हम देख सकते हैं। बट जैसे कि सबको पता है इसका एंडिंग कुछ हैप्पी नहीं है, सैड ही है। तो मेरा प्रेडिक्शन है, लेकिन मुझे पता नहीं किस कैसे क्यों मारते हैं इसको, बट डेफिनेटली ये पता है मुझे वो मिल्टन के लोग ही होते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। सो मुझे लगता है वो फिर काम करा लेंगे एंड फिर कुछ खत्म हो जाएगा जैसे होता है हमेशा की तरह। टेम इतना धोखा जॉन की जिंदगी में। टेम एली अंदर रहता है यहाँ पर, अगर आपको सबको याद होगा। एंड अपॉइंटेड टाइम। ओ नहीं, रेबल को ही मार रहे हैं लोग। Quítate, estúpido, le voy a dar un balazo, quítate, quítate, pendejo, quítate. 1, 2, 3. ¡Todo por la revolución! ¡Ándale! Calmado, no, para atrás, para atrás. Usted para atrás, para atrás, para atrás. ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen cómo cantan los tiros! ¡Otra vez! अच्छा अब्राहम पकड़ा गया, वो ये पता नहीं था मुझे। आई मीन डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता था ये।
My brothers and I are just discussing the future of our country. Okay, let this man go. And who are you, gringo? I'm no one. But unless you want this town to tear you and your boys to shreds, I suggest you let him go. And you think you could tell me what to do, friend? Oh, you should listen to him, friend. Look at that. You want to risk it? The American is a drunk. If I were you, I would pull that trigger. Put the gun down, Americano. Ya, mátalo. ¡Déjenme, hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! अब भाई साहब ये Maria. So you want to settle this now, friend? Or you want me to shoot you in the head right now for that poor girl? Okay, but we fight like men, not like dogs. डैम लुइसा को मार दिया इसने की बार में। ओ ये अरे इसमें तो अपन गंगा राजेरे देवा ये तो हर रोज करता है बट डेफिनेटली ब्रूटल मैन। अब मेरी इज्जत फालूदा ना हो जाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं एक ही बार में कर दिखाऊं। लोल कर लो बात पांडे कपूर डूड लुइसा को सच भी बता नहीं पाया अब्राहम का डूड सही नहीं था ये। I will rally the peasants, John. You go after the prisoners. Dude. That's war, boys and girls. बहुत गलत। ये क्या? ये मैंने कहाँ मार करा? डूड काड़ा बना दिया मेरे को। Shoot the locks, okay. गन इतने पावरफुल नहीं है, एज यू कैन सी। दो बार मारना पड़ रहा मुझे। ओ नहीं, ये एक बार में खुल गया था तो मतलब मैं एम ही गलत कर रहा था। ठीक है, अब सही है। जॉइन रीज। ओ भाई पूरी बारात आई है। वी नीड विंचेस्टर रिपीटर। ओ भाई कौन मारा मुझे? सरवाइव कैसे कर गया? इनका हेड पे एम था लॉल मेरा। वो तो मारने पड़ता, च्युइंगम जैसा हेड इनका क्योंकि। अबे रील, अबे गन की गोली नहीं थी। अच्छा रेड डेड 2 में ऐसा होता है कि अपने आप अबे कवर ले कवर ले कवर ले कवर ले। मैं 2 मिनट में चोट हो जाऊंगा, पता भी चलेगा नहीं यहाँ पर। काम करते हैं, रोलिंग ब्लॉक निकालते हैं बिकॉज इसकी दरकार थी।
लेट्स गो। भाई साहब गोलियों की एक और बंदा जा रहा है उसी गन में। बैठ जा दिखाता तुझे मैं, मौका तक नहीं मिला कूतरे को। खत्म। वहीं पर ही जा रहा था उसको यूज करने। क्या था नाम उसका? गैटलिंग गन। यहाँ पर एलिंदे है। अब एलिंदे का भी वक्त आ चुका है, तो ये एक और कूल एलिमेंट राइट दिया। मैन द गैटलिंग गन। ओके, गैटलिंग गन बोलते कोपड़ी खोलते। ओह ये देखो, गन पाउडर बैरल्स आया नहीं अभी तक। ये था मैंने डू नॉट शूट द पाउडर केक्स अंटिल रीज मैन्स आर क्लियर। ओके गैटलिंग गन की फायर सरवाइव कर गया बंदा, अलग ही लेवल है। दुनिया सारी Adelante, a la mansión. पुट डाउन। ओके चलते हैं, बहुत हो गया। बाहर से जितना भी कर रहा था हमने कर दिया है। अब आती है अंदर की बात, अंदर की बार सॉरी, मतलब अंदर की बारी। बहुत मार रहा है बंदा। Traigan hachas. Echen la puerta abajo. Open this goddamn door. Goddamn. There are more coming up the hill. Preparados. Devuelven la puerta. No dejen a nadie entrar. तो बात की हम गैटलिंग गन चला सकते हैं एक और बार। उसको पास आने नहीं देना। ये भाई गोली कवर ले। फटी पड़ी हुई है भाई साहब। थोड़ा स्लो है ये गेम। दो चेंज नहीं दरकार है। बोल्ट एक्शन देखते हैं। लॉल वो लास्ट बंदे को क्यों छोड़ू मैं? अलिंदा भी हमारे कब्जे में नहीं है। नाम ने उसको मारा है। ज्यादा दूर नहीं, हम ज्यादा फ्रिकिंग दूर नहीं है। ओ बिल विलियमसन राइट देयर। लेट्स गो। कैच बिल विलियमसन। बिल विलियमसन वैसे उसने बहुत वेट लूज कर दिया था डच की गैंग के बाद। लाइक ऐसे कैसे ये बहुत हेल्दी नहीं बोलूंगा, मोटा हुआ करता था, बट राइट नाउ ये मोटा नहीं है। ओ माय गॉड अब्राहम लिंकन। भागने ही दरकार है मैं। डिसेबल विलियमसन स्टेज कोच। इतनी दूर है वो। चौधरी गणेश
डिसेबल मतलब डेफिनेटली मुझे उसको मारना नहीं है, पर डिसेबल करूँगा कैसे मैं? टुकड़ों को तो खत्म करूँगा डेफिनेटली पहले। One down, to go. Another one down. Oh my God, ये कौन है? गैलेक्सन चला रहा है। Stay and चलो fight भैया। me, you coward! ये बिल विलियमसन है क्या? ये बिल विलियमसन नहीं है। लेट्स गो, डिसेबल कर रहा मतलब सबका सत्यानाश कर देना। इसके अंदर है ना बिल विलियमसन, एलियन दे भी है। लेट्स गो, वी आर सो क्लोज। I'm coming out! Don't shoot! Here! मैंने उसके हाथ में स्वॉर्ड देखा क्या? हाँ, Let me live. I will Gold leave the skin country, वाले। I promise. अब ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए एक्चुअली। Always was weak-minded. You're the one who let Dutch drive. मैं उसको जीने दूंगा ही नहीं मैं, जैसे कि मैंने बताया एलियन दे को नहीं छोड़ने वाला मैं। And that's why. Allende is dead. Mexico is mine. Let's go. दोनों का खेल खत्म कर दिया। नहीं, अच्छा अगर मैं बिल विलियमसन को नहीं मारता तो वो तो मार ही दिया, जैसे कि उसने मारा भी। अगर मैं बिल विलियमसन को मारता तो एलियन दे को मारता। सो क्या बात है, मतलब ऑप्शन था नहीं उनके पास सर्वाइव करने का, कोई भी नेगोशिएशन करने का, कुछ भी नहीं। And it is all thanks to you, John. And to the people who laid down their lives. People like Luisa. Oh yes, she was very brave, and she will be missed. Who was she again? Peasant girl wife to be. Oh Comedy कर yes, रहे of हैं। course. She will have a day named after her. Laura's Day. Luisa. What? Oh yes, I know Laura as well. Magnificent girl. Like riding a pompous bull it was, amigo. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, ¿qué hacen? Levántense. Well, I must say, I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Well, travel safely, amigo. Come on. No more fancy words. तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है सही में, बिकॉज हमारा मेन मिशन था बिल विलियमसन को पकड़ना। एक्चुअली हमने पकड़ा नहीं उसको, तो मार ही दिया हमने, हालांकि कोई ऑप्शन था नहीं उसको पकड़ने का। रेबल आउटफिट न्यू एट इट, वेट सही में चेक की रेबल आउटफिट क्या है। अच्छा ये सब मुझे चाहिए एक्चुअली, बट वॉट एवर मैन। तेरी अब कौन सा मिशन बचा है? अभी जो मिशन है वो इतनी दूर है भाई। एजेंट रॉस एंड मिल्टन, एज यू गाइस नो कौन है ये लोग, क्योंकि एक और बार हेल्थ एरिया नहीं है। आर्थर मॉर्गन ने भी अपने मरने से पहले उनके लिए काम किया था, इसलिए काम किया ताकि एबिगेल सेफ रहे हैं। ओ याद है एरिया जहाँ पर हम फर्स्ट आए थे, ये ब्लैक वाटर है डेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कम बैक बिटवीन 7 से ओके कोई, ओ शूट मैंने गिरा दिया उसको शायद, व्हाटएवर मैन। यहाँ पे थोड़ा सो लेते हैं ना। Fear one another's burden. One 101, 102, 103, 105, 106. I'm here to see Mr. Ross. 107, 109. Edgar Ross. 113. Upstairs on the right. 114. 115. 116. 117. Mr. Marston, so glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? Being well looked after.
well looked after. I want to see him. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here? Right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston, I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuella. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Thanks, sir. Like hanging you for murder. Or confiscating all your property, like that little farm of yours, or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game. So calm down and play along with us. Where's my wife? You know, I forget, but I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please, I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuella. We still don't have Vanderlyn, but now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. The last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty squabble by another lowlife. We believe Vanderlyn is holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity riverboat. Ah, yes. Another group of renegades. Obviously, the first group, your group, has, shall we say, been disbanded? Disbanded. Anyway, Mr. Ford and Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston, your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. Okay? After you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. You're too kind. See, I have nothing but your best interest at heart. Let's hope it doesn't go off by mistake. ये गन मुझे याद नहीं आ रहा क्या ये गन कुछ कनेक्टेड है Red Dead 2 से I have a patent for that, sir. This is an outrage. Oh, yeah. Mr. Marston. You're alive. Hello, Wes Dickens. Thought you were headed to Peking. So did I. So did I. A long story. But now it seems I'm being put under arrest and charged with narcotic possession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud, the kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for no man. Let's hurry along. 344, 345, 347, 348, 3... तो ये लोग मुझे लेके जाएंगे टच के पास आई मीन मैं भूल ही गया था उसके बारे में मुझे लगा सब खत्म हो गया बट नहीं एक टच है वैंडरलैंड पड़े वो उसको अभी तक हमने कैप्चर नहीं किया हाई पावर पिस्टल मिली है तो इसका क्या कनेक्शन है मुझे याद नहीं आ रहा Red Dead 2 में कोई कनेक्शन है भी कि नहीं काफी अरसा हो गया एक्चुअली Red Dead 2 को खेले Lawmakers and lawbreakers working together for the good of civilization. Like you always say, sir, the higher the stakes, the smarter you have to play the game. I can't imagine I ever said anything quite so trite. In any case, I'm not sure Mr. Marston would agree with us. Unfortunately, Mr. Marston isn't broad-minded enough to appreciate the unique opportunity we're offering him. Son of a Best watch your damn mouth! And it's strange you should say that, Mr. Marston, because according to my files, you are the whore's son. Now, what else can I recall from the files? Ooh, let's see. You killed hundreds of innocent people. You've robbed at least 40 banks that we're aware of. They told us there was a prize when you got to 50. I'm glad this is all such a joke to you. I want my family. And I'm sure all the men you murdered wanted their families too. Come now, you're stupid. But you're not that stupid. We both know how this has to be. And it could be all over today. As soon as we find Dutch Vanderlyn, you can go back home and
play being a farmer again, or whatever else you've been pretending to do for the last few years. First it was Bill, now it's Dutch. After Dutch, it'll be somebody else. Where does it end? It ends when we say it ends. You're in no position to make demands. Life you live. You don't just walk away from that. Buy a few chickens and make it all disappear. You should be dead or rotting in a jail cell by now. We are giving you a chance at new life. A chance at redemption. You can't erase your past, Mr. Marston. But we can. She's running well, sir. Such an elegant way to travel. What do you think of this automobile, Mr. Marston? Slow. But so convenient and reliable. Are you comfortable? No. You see this, Mr. Fordham? The brooding cowboy. There aren't many of these left, you know. A bit of a cliche, admittedly, but still a dying breed. Like the buffalo. Just as dumb, but not quite as noble. They move most cows by rail these days, I hear. Not where I'm from, they don't. But you aren't from anywhere. A new dawn is breaking, Mr. Marston. This is the age of the machine. And soon, we'll all be living on the moon. Maybe. This is the future. Anything is possible. Finally, this godforsaken land is entering the 20th century. Prosperity has arrived. In the form of assholes like you. It's not far now. The old Serendipity wreck has been used as an occasional criminal hideout for years. We were informed that Vanderlyn and his gang are making camp there. We'll stop on the cliff above, and you and Agent Fordham will go on foot. I'll stay with the vehicle and keep watch. And you'll do as I say, Marston. Don't try anything stupid. Oh, I think he knows what's at stake. Don't you, Mr. Marston? Let's find Dutch and finish this. Wreck of the Serendipity. इधर ही हमें आना था तो डच ने एक और गैंग कोड डाला है लॉल आई मीन बना डाला है एजेंट फॉर देम तो ये लास्ट होएगा हमारा लास्ट वेंचर म्यूजिक बड़ा वियर्ड वाइब दे रहा है Keep quiet and stay close. Yes, नहीं पता है कि डच कितना बड़ा Vanderlyn is the priority. इम्पोर्टेंट Go in, मेंबर take था it down, get the hell out of here. Quick and clean. You leave Dutch to me. We don't want you getting that suit dirty. If you step out of line, even मे बी ये लोग पहले से प्लान भी कर रखा था I इन्होंने hope कि you're aware of the consequences. रेड डेड 2 बनाएंगे ये लोग बस टाइम लग गया ज़्यादा ही बनाने में 2010 एंड 2000 आई गेस 18 में निकला ना गेम 8 साल बाद 7 साल बाद 19 मुझे भी याद नहीं एक्चुअली उसकी रिलीज Seems real quiet, don't you think? You tell me. Maybe Dutch caught wind of things. That informant better not have been lying to us. Keep your eyes open. They are open. I don't see nothing. It doesn't feel right. This place is usually teeming with lowlifes. डेफिनेटली डच को पता चल चुका है ऐसी जगह पे डच Damn. There's someone up there. You go investigate. I'll keep watch here. फट गई उसकी पहली कौन है Over ये here! I found him! Good God, that's our informant. Gnosis, what the hell's going on here? अच्छा It's a He got trap. spy. Shit, Marston, you'll have to carry this man. I don't think he can walk. Dude, मैं क्यों कर रहा हूँ तू क्यों नहीं कर रहा है Bastard! Come on, we need to get him to safety. ओ भाई साहब पावरफुल गन है ये सही में वन शॉट बेबी नाश्ता खेल जाने नहीं चाहिए ये मुझे कहना चाहते हैं You want more? What the hell's happening here? Dude, वो कब वैनिश हो गया Come on, let's Oh my god, ये गन सही में बहुत भयंकर है dude. Nice. गन पावर बोलते हैं. But यहाँ पे तो काफी ज़्यादा ही लोग हैं. I'm a brave, a warrior.
I know. वो रो रहा है लॉल. Just drop the gun! Hey, what? अबे वो गन चल क्यों नहीं रही थी? नाश्ता क्या ही रो रहा है. ऐसा लग रहा है सब उसी को मार रहे हैं लॉल. मुझे तो कोई मार ही नहीं रहा. Keep those hands where I can see. Path looks clear. Let's get back to Agent Ross. वो तो आया तक नहीं. एडगर रॉस. वो ऊपर से नजारा देख रहा है. तो गन चलाना आता है ना, वो कवर दे सकता था बाय द वे. इस उसका किरदार पता चल रहा है कितना डूबड़ा है. ये मुझे पिकी ब्लेंडर के उसके याद दिलाता है. लाइक वो पुलिस ऑफिसर था ना, जिसका नाम याद नहीं है. हाँ. Put him in the car so we can get out of here. Let's go. There might be more of them. Right to black water. Christ alive! What the hell happened down there? It was a trap. They were waiting for us. And who is this savage? A prisoner? This is the informant, sir. Do उसको भी नहीं पता. speak English? Yes, he does, sir. He's the informant, Nastas. Don't get snarky with me, Fordham. We found him tied up on the boat. Then they jumped us. Nice of you to help us out. Hell of a plan sending in 2 men to take on an entire gang of outlaws. Especially when one of them's an office clerk. Or social secretary or some Just such. shut your mouth. तो और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है आई गेस. ओके. Come on, not now. What's wrong? I don't know. The motor just gave out. Well, fix it, you fool. We need to get this man to a doctor. Of course, sir. It's Dutch. I knew it. Marston, Let's hold go. them off. Fordham, he'll fix that damn engine. ओह ये क्या टेक्नोलॉजी है. तो कहता फाइनली एडगर रॉस लड़ेगा. मैं लड़ेगा. ओ भाई बहुत सारे लोग आए हैं. या एडगर रॉस मर जा, मजा आएगा. ओ माय गॉड. वालार मॉर्गुलिस. आई मीन डेफिनेटली इनकी दरकार थी मरने की. I can't see any more of them. Fordham, are we ready? Yes, sir. I think so. Come on. So let's nice. get back to Blackwater. टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, ये सब पता चलता है हमें. Damn, that was close. We're lucky to be alive. I'm beginning to see why Mr. Marston here has made it to such a ripe old age. You'll make me blush with all these kind words. So much for this automobile of yours. If this is the future, God help us all. It's not the automobile. The bad workman shouldn't blame his tools. Perhaps if Mr. Fordham maneuvered it with a little more finesse. I was trying to escape an ambush, sir. Even if it was running fine, they'd still have caught us. I can walk faster than this piece of crap. Give me a horse any day. So what now? Do I get to see my family? Where is Dutch Vanderlyn?
I don't know. In that case, old boy, no, you don't get to see your family. It's a fairly simple agreement, Mr. Marston, even for a man as devoid of intellect as yourself. If you'd like me to explain it to you again, I'd be more than willing. No, you've said enough. We'll find Vanderlyn soon enough. For now, however, I suggest we call it a day. So how does it feel, taking a man's wife and child from him? Does it make you feel good? How does it feel to kill hundreds of men in cold blood? You're a coward. You're a murderer. Actions have consequences, Mr. Marston. Come now, try to look on the bright side. The bright side? There ain't no bright side. Your family is enjoying a much-needed vacation, and in far more luxurious surroundings than those to which they are accustomed, I assure you. Soon you will be able to start a new life together, absolved of all your sins. I can think of far more upsetting alternatives. We should take the Indian to Professor McDougal, see what he can get out of him. Good idea, sir. I just can't communicate with them. Hello, sir. ये इंडियन है। रेड डेड 2 में इन्हीं को इंडियन कहा जाता है। Thank God for that. I mean रेड डेड 2 क्या 1 में भी रेड डेड यूनिवर्स एक्चुअली। This is the office of an anthropologist named McDougal. He was thrown out of Yale for degeneracy. We should tell you something. Indeed, but he's been helping us deal with the natives in this area. They see him and they presume we're all idiot academics. Huh? Give me a hand here, Marston. Ah, Mr. Ross. Mr. Fordham? Good day. Good day. What on earth's going on here? Kid got shot in the leg. Beat up pretty good. We'll send a doctor. Now, McDougal, we need information from this fellow about Dutch Vanderland. Can you see what you can find out for us? Do my best, sir. Make sure you do. Professor McDougal has been a good friend of the U.S. government, Mr. Marston, just like you. Why don't you see if you can help him in his study of the native problem in this county? That's a good one. Careful, mister. How you doing?